हेलो हेलो हेलो। लाइव है सर हम लोग। लाइव है सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? गुड, वेरी गुड, ग्रेट। So we are doing India Pakistan, right? एक बॉटल एक ग्लास और देना। एंड अंडर इंडिया पाकिस्तान हमने क्या लिखा लास्ट? सियाचिन कर लिया था। एनी इशू विद द लास्ट क्लास? So what we have done in the last? Sargrik is over. Siachen. Have you written about the Siachen claim and everything? चेक कर लीजिए एक बार। Siachen over ना? Okay. Then next we will discuss the CPEC, China Pakistan Economic Corridor. इधर आप लोग कभी एक दिन आते एक दिन गायब हो जाते हैं। फ्राइडे यू आर नॉट देयर इन क्लास। आप भी क्लास में नहीं थे। दिस नॉट गुड। ओके ओके। बट 1 o'clock तो हमारी क्लास ओवर हो जाती है। and the timing for this is 1:35. After 1:35 you can go. Friday 1:35 it start na, but we end the class at 1. Okay, चलिए, not an issue. So China Pakistan economic corridor. So let's start this. So we have seen the issues with the Siachen, Sargrik, like LOC. We have seen the LOC, right? आप पूछा थे सर LOC के बारे में. You are asking about the LOC. LOC, you are asking about the LOC. The area of the LOC. This is the area of LOC. This whole from here. This is LOC. This is under China occupations, occupied by Chinese government, and this is rest with the India. ठीक है. Now अगर हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, it started from the provinces in China and it will end starting from there to the Gwadar port in Pakistan. तो पाकिस्तान का जो ग्वाडर पोर्ट है ना, that will be the its connectivity. और वहां से वो कनेक्ट कहां कर रहे हैं? From there, if you see, starting from the Kashgar in China, ठीक, and from there it is entering into, this is POK, दिख रहा है? This area is a POK, what we have seen, right? Entering into the POK, and from POK it will end at the Gwadar port. That is a port developed by China in Pakistan, and through Gwadar port, अब याद कीजिए पिछली क्लास, इंडिया मालदीव्स, तो मालदीव में भी चाइनीज प्रेजेंस बढ़ रही थी. तो थ्रू ग्वाडर पोर्ट इट विल गिव चाइना एन एज कंट्रोलिंग द इंडियन ओशन स्ट्रेट. अरेबियन सी में जो मालदीव के पास का एरिया में, वहां कंट्रोल उसे देगा. यस और नो? इट गिव एक्सेस. सेकंड, यस,
This is your second class, ना? You are been in the first class. Second अगर हम बात करें तो suppose कि that if this one belt, one road initiative is inoperative. One belt, one road initiative. It is also known as a belt and road initiative. दोनों में आप कोई भी बोल सकते हैं. इसके थ्रू अगर ये डेवलप्ड हो जाता है and through its it has established its base in the Sri Lanka also, right? And if that is happened, right, तो China will avoid, अगर हम बात करें तो so that will help China to avoid Strait of Malacca. क्योंकि अभी जो ट्रेड हो रही है, चाइना जो वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहा है, यूजिंग स्टेट ऑफ मलक्का फ्रॉम हियर. Yes or no? Are you getting my point? If it got established its port at the Myanmar Gateway, it's here. It will help the China to directly bypass this Strait of Malacca, and this will help or reduce its economic dependence. ठीक है, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगी, ट्रेड भी सफिशिएंटली बेनिफिट करेगा जब यहाँ पर ये यूज कर लेगा तब. तो इससे इसको डायरेक्ट एक्सेस कहाँ मिल जाएगा? चाइना, मालदीव एंड इन द अरेबियन ओशन. इट मींस वंस एस्टैब्लिशिंग, राइट. एंड अभी हमने देखा दैट वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव विल लीड्स टू द ग्वादर पोर्ट, जिसके थ्रू वो वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में डायरेक्टली एंटर कर सकता है. आर यू गेटिंग और नॉट? राइट. एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प to get hold of the Arabian Sea. Maldives में establish करके, right? And this will also help. तो इसके थ्रू क्या करेगा चाइना? It will encircle the India, right? Now under this we will discuss what is CPC, right? Then what are the strategic threat, sovereignty threat to the India or security threat to the India. Because the questions will be from, because it is directly affecting Indian sovereignty, because the road BRI which has been established on an area of POK, which is a territorial claim of India. है तो वो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड में, लेकिन अभी भी इंडिया उसे कंसीडर अपना ही करता है और मैप में भी शो रखता है. एंड इफ यू गो थ्रू द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो देयर इज वन सीट रिजर्व फॉर द POK. पार्लियामेंट में एक सीट आज उसके लिए भी MP का सीट वैसा खाली रहती है, considering that is a part of India. So through it will be a security and sovereignty threat, right? And you can imagine the amount of threat related to security once the China get positions to control of a Indian Ocean, तो easily accessible होगा. यहाँ पर अगर establish कर लेता है म्यांमार में, तो it means China is directly accessible to northeast region. Yes or no? Right? This is Myanmar. It is boundary with India. So if get a chance to establish a port in the manner that it will be hold BRI. Yes. So तो इसलिए कह रहा हूं कि थ्रू दिस इट विल हेल्प चाइना टू कंट्रोल. और ग्वादर पोर्ट पे करने से उसको दो फायदा है. एक तो अरेबियन सी में उसके सी पोर्ट से वो आपका मालदीव तक का स्ट्रेट को कर सकता है. एंड सेकेंड, थ्रू ग्वादर इट विल एंटर इनटू द सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया. सो थ्रू दिस इकोनॉमिकली बेनिफिट भी है उसे, एक्सपेंसेस कम होंगे. rather going through here, it will directly enter into this. तो ट्रेड बढ़ेगा विद द सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया, जो कि आजकल नेचुरल रिजर्व्स है इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम, ऑयल एंड एवरीथिंग. यस और नो? समझ रहे हैं? राइट. सो इफ यू सी द मैप ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर CPC, तो C, so it is starting from Kashgar and ending at the Gwadar port.
So this is CPC, right? Any doubt? Now we will write down the what is the CPC, how it will threat the sovereignty of India, and how it is going to threat the security of India. In is Pakistan, is in Pakistan. नहीं नहीं नहीं, ग्वादर पोर्ट तो ये है, ये लाइन, दिस रेड लाइन इज रूट, BRI route, BRI, this red line is actually BRI route, or you can say that one belt one road initiative. हाँ, यहां से स्टार्ट हो रहा है कास्कर से, तो कास्कर a region of China will be directly connected through this BRI route to Gwadar port, और फिर इसके थ्रू यहां से it will give help to control the Indian Ocean also, Arabian Sea, और सेंट्रल एशिया में भी एंट्री इसको ये प्रोवाइड करेगी, देन वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, then from there they can move to the, which will help in economic growth. हाँ, ये तो रीजन POK नहीं हो सकता है, तो this is a security threat, sovereignty threat, just because of this. And once now this what happening, why it is now already it is a threat, because to develop the infrastructure in the POK, the Chinese were residing in Pakistan, POK areas, in a Pakistani, as a Pakistani resident. So they're building, so they're stationed the military also, which is directly threat to India from border. Yes, वही ये पूरा एरिया पाकिस्तान ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है, चलिए राइट डाउन फिर CPC. एंड वंस वी फिनिश दिस इंडिया एंड नेवर ना, फिर हमें समझने लायक कुछ है नहीं, देन वी हैव टू ओनली राइट अबाउट द इंडिया USA, क्योंकि अब बॉर्डर लगती नहीं है तो हमें समझना नहीं है. नहीं, ये तो हमने पहले डिस्कस किया. BRI इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू द एंशिएंट रूट ऑफ सिल्क रूट, विच इज अर्लियर नॉट सिल्क रूट इन एंशिएंट. नहीं, सिल्क रूट इज थ्रू बोथ लैंड कनेक्टिंग फ्रॉम हिंदू कुश to Central Asia, and it is also a sea route, both. Yes, was that's why it is known as belt and road. Belt is a road route and road is a maritime route, giving connectivity of China from both to the Central Asia, because in the ancient period also Central Asia, India, West Asia is a hub for the trading. हाँ, हब, वो हब थी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है. आपने एंशिएंट हिस्ट्री अगर पढ़ा हो ट्रेड में, तो वी हैव आल्सो गॉटन क्वाइन फ्रॉम द अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंडिया, इन इंडिया देयर इज अ क्वाइन फ्रॉम अफगानिस्तान, इराक. मेसोपोटामियम सिविलाइजेशंस के साथ हमारा ट्रेड था या नहीं? इंडस सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, दैट इज इन द वेस्टर्न साइड, इराक, ईरान और ये वाला है. एंड बानियान, इफ यू गो थ्रू बानियान, दैट इज अफगानिस्तान, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड से सा, ठीक है. चलिए राइट डाउन CPEC. सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. नाउ फ्रॉम आफ्टरवर्ड आई विल यूज ओनली CPEC. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर is a part of OBOR bracket one belt one road initiatives or BRI initiative. ठीक है, it's a part of OBOR one belt one road initiative, or it is also known as a BRI initiative, belt and road initiative, which is a project of China. Next, it aims to connect Kasgar in Xinjiang province. Kasgar, Kasgar in Xinjiang province of China
Xinjiang province of China. Kashgar is in Xinjiang province of China. To warm water port Gwadar in Balochistan province of Pakistan. Kashgar is in Xinjiang province of China. To warm water, this is an area of warm water. Warm water port of Gwadar in Balochistan province of Pakistan. अभी तो पार्ट है ही बालूचिस्तान, बट बालूचिस्तान इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस. सिंध सेपरेशन, सो इंडिपेंडेंस, सिंध, बालूचिस्तान. Not we are not claiming our part. We are saying that Balochistan should be give independent. Because see, it's a long history that when Pakistan got independence, na, so Balochistan was not in a favor to joining Pakistan. They want to remain free, but by fraud means they have promised that we will give you a freedom, but by fraud they have annexed the Balochistan, and that's why there is a movement of freedom movement of Balochistan, Sindh, right, in the POK region, in Pakistan region. This is a Gwadar port, which is a warm water, and this is situated in Balochistan. Balochistan is a province in the Pakistan. ठीक है, next point. थोड़ा सा fast लिखना शुरू कीजिए. Completed in. CPC is a part of OBOR, larger OBOR or BRI initiative, right? And it is connected in Gwadar. It connect BRI initiative. It connect Kashgar, Xinjiang province of China to the warm water port of Gwadar, which is in Balochistan province of Pakistan. Next point. It involves multiple infrastructure projects. It means CPEC involves multiple infrastructure projects like highways, railroad, means railways and railroad, and waterways and pipelines. Highway, railroads, waterways and pipelines. Clear? Next point. It is estimated that by 2030, it is estimated by 2030 it will connect West Asia to the Western China. हाँ, ये वेस्टर्न चाइना पार्ट है ना. नेक्स्ट पॉइंट. द प्रोजेक्ट थ्रू द डेवलपमेंट of Gwadar port, also has strategic significance. As it provides China a presence in Indian Ocean. As it provides China a presence in Indian Ocean. So now you are in a position to understand how this CPC will provide a China to presence Gwadar port, and it will help. So this Gwadar port will provide a two-way connectivity to China. One, it will lead to the West Asia and Central Asia, right, in the territory through the land, and by the port, it will
dominate the southern of the Gwadar port, that is an Arabian Ocean in the Indian Oceans, Arabian Sea का वो जो part हमने देखा अभी, right? And from there it will control the Indian Oceans, right? And once हम लोग we will do the this also OBR also when we will do the China na India China relations, so there we will see the OBR also. In this we will see how China, a pulse of a string, that is a pulse of string name, how it is encircling India. Is this clear? Okay, this is an introduction related to CPC. Now write down next heading, CPC and sovereignty of India. तो थोड़ा सा फास्ट देखें. This corridor between China and Pakistan is this corridor, CPC corridor between China and Pakistan, is not only passing through India's territory, this project or corridor between China and Pakistan is not only passing through India's territory, means from India's territory means POK, right? तो ब्रैकेट में आप इंडिया टेरिटरी से पीओके लिख सकते हैं, बट ऑल्सो पोजिंग अ थ्रेट टू सोवरेनिटी ऑफ इंडिया. अभी आप शुरू लाइन में द कॉरिडोर थोड़ा फास्ट लिखिए. द कॉरिडोर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इज नॉट ओनली पासिंग थ्रू इंडिया टेरिटरी, दैट इज फ्रॉम द पीओके, बट ऑल्सो पोजिंग अ थ्रेट टू सोवरेनिटी ऑफ इंडिया. अब मान लीजिए कि पीओके में वो आकर स्टेशन हो जाता है, राइट? तो एक तो पीओके में जिसको इंडिया अपना पार्ट कंसीडर कर रहा है, दैट इज प्लानिंग, इट हैज अ फुल सोवरेन पावर टू मेक एनी डिसीजन रिलेटेड टू पीओके एंड ऑल, सो दैट विल बी थ्रेट. तो पहले एक तो एरिया से भी पास हो रहा है एंड विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिया, दैट इज अ सोवरेनिटी थ्रेट ऑल्सो, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, दिस कॉरिडोर passes through Gilgit Baltistan area of Kashmir, passes through Gilgit Baltistan. देखिए, this is a Pakistan occupied Kashmir, ठीक है? It is passing from here, Gilgit Baltistan area, right? Gilgit Baltistan area of Kashmir, which is occupied by Pakistan. Out of the LOC, 1972, yes, and in 1949 status quo when India went to the UN for the 1948 war. So this we come to know that this Baltistan area, Gilgit Baltistan, is occupied by Kashmir, Pakistan from 1948, the war. No, that's why, see, now India's claim is that now there is no conflict of interest related to China with Pakistan, but rather now the present government has changed its stance after dissolving 370, Article 370, and it stated, Indian government, the foreign ministry, that the conflict between India and Pakistan is not about the Kashmir, rather now the conflict is about the POK that has been occupied by the Pakistan, which is a territory of India. Are you getting my point, right? And this is the line of which is a disputed territory. This is disputed territory. So now we are talking about this. This is our territory. Okay. Next point. So now here there is no need to require that Pakistan occupied in 1948. We have seen already. Next one, likhiye that India position on one belt, OBOR, India's
position on OBOR, One Belt One Road initiative, that CPEC violates the sovereignty and territorial integrity of India. That CPEC violates the sovereignty and territorial integrity of India. Next point. A project can never be accepted by a country which violates the sovereign and territorial integrity of the country. That violates the sovereignty and territorial integrity of that country. Territorial integrity of that country. Next. India believes that the initiatives of the connectivity must be based on the universally accepted and the other recognized, based on universally accepted and the other recognized international norms, comma, transparency and equality, comma, rule of law, international norms, comma, transparency and equality, comma, rule of law, and must respect the sovereignty and territorial integrity. Sovereignty and territorial integrity. Must respect sovereignty and territorial integrity. So India's position is that this project of connectivity should be based on international norms, right? It means non-interference in any other nations, no threat to the other nations, right? The rule of law should be prevailed, equality should be there, right? And transparency should be there, and respect for the sovereignty and territorial integrity should be there, which China violates. Okay? Next point. In 2007, a Raisina dialogue India raised the issue that China has initiated a construction without consulting India. Raised a issue that China has initiated a constructions without consulting
India through a territory which is occupied by Pakistan, or which is Pakistan occupied Kashmir, whatever you can write. Clear? Next point. The Prime Minister of India also asserted that is Narendra Modi. The Prime Minister of India also asserted that the Prime Minister of India, that is Modi, Mr. Modi, has also asserted, ASSERTED, asserted that connectivity between two countries cannot undermine the sovereignty of other state. ठीक है? So this is CPC and sovereignty of India. Is it clear? Any doubt? नहीं? Next लिखिए CPEC and security threat to India. अब आप उनके प्रेजेंस से आप समझ सकते हैं कि how it will be a security threat to India, because they have been stationing in this area. Okay, so they are maintaining military over there, started constructions base. So POK can be used as an base against India's in an emergency situations. So it is a direct threat to the security threat to the India's, and it can also boost Pakistan claim over Kashmir, and it can let the infiltrations be happen. ठीक है, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट आपका अफगानिस्तान कश्मीर में भी है, अक्साई चीन का इलाका जो है, we have seen, right? So that can also be. So this will lead to the threat, security threat. Write down. Ever since the construction of the corridor is started, ever since the construction of corridor is started, the Chinese military presence in the area is also been embarked. EMBARKED, embarked. EMBARKED, embarked. Visible. ठीक है, full stop. Continue the point. In 2017, Chinese, उसी में continue कीजिए point को. We are continuing the what we have written earlier, that in 2017 how the presence has been seen. So we are writing that in 2017 Chinese troops marched in the parade of Chinese troops marched in the parade of Pakistan's Day in Islamabad. In Pakistan's Day in Islamabad. It means on the Independence Day of the Pakistan, when they have a march. हमारे यहाँ भी होता ना, on the 15th of August we had also had a march, right? So उस दिन Chinese troops उनमें march की. So that is a visible, and this was the first incident that Chinese military was seen participating in other nations' celebrations. So continue the point. This was the first time when Chinese military took part in any parade outside its country. हाँ, इसी को कंटिन्यू कीजिए point, that this was the first time when Chinese military took part in any parade outside its country. First time. अच्छा, this was the first time when Chinese military, और Chinese military को क्या बोलते हैं? PLA, People's Liberation Army. So Chinese military took part
in any parade outside its country. चाइना की है कि अमेरिका की है? चाइना. Troops took part in any parade outside its country. ठीक है. Next point. People's Liberation Army, that is Chinese army. People's Liberation Army has also deployed almost 30,000 soldiers. Has also deployed almost 30,000 soldiers under the local name in Pakistan. Under the local name of in Pakistan. ठीक है. Next point. These military personnel would establish a security wing in POK. These military personnel, PERSONNEL personnel would establish a security wing. Would established. Would, WOULD, would. Will का past tense. Would established a security wing in POK. And would be deployed around the project. And would be deployed around the project built by the Chinese companies. And would be deployed around the project built by the Chinese company. ठीक है. तो चाइनीज कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, तो दे आर नॉट सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी, रादर दे आर taking their own army to give a protection to the companies, Chinese company, which were building the structure. So through this they are also establishing a security wing and base which is considered India as a security threat to them. ठीक है. Is it clear or not? Right. Next point. The Pakistan's Navy official have also accepted. Next point. The Pakistan Navy officials have also accepted. The Pakistan's Navy officials have also accepted that Chinese naval ship would be deployed at Gwadar port in cooperation with the deployed at Gwadar port in cooperation with the Pakistan Navy. Cooperations with the Pakistan Navy for safeguard of port and trade under this corridor. Chinese Navy they are getting station in Gwadar port. तो यहाँ पर चाइनीज और पाकिस्तान दोनों नेवी मिल करके they will give security to the port also and to the trade route also. So both army were established. Safeguard of the port, that is Gwadar port, and trade under the corridor. क्या हो गया? आज कुछ फास्ट चल रहा हूँ क्या? आप लोग स्लो चल रहे हैं? हाँ बोलिए. यस. हाँ, पाकिस्तान आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू कि दे आर बिलोंग टू पाकिस्तान. हाँ, बिकॉज दिस इज अ सिक्योर, दिस इज एरिया इज क्लेमिंग इंडिया ना,
फिर वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया के साथ आ जाएंगे. So they are not showing that we have been indulged through military also. That it will be considered that China is establishing a military base in POK. That will be directly dispute with India. Phone ko please silent kar lijiye. Is this clear? So through this, so they are establishing military at the POK and naval base as the Gwadar. ठीक है, पोर्ट की सिक्योरिटी भी करेंगे और इसके थ्रू जो ट्रेड रूट है दैट इज विल आल्सो सेफगार्डेड बाय द बोथ पाकिस्तान नेवी एंड चाइनीज नेवी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. 8 submarines, 8 EIGHT 8 number 8 submarines are delivered to Pakistan by China. 8 submarines, Pandubi, sorry, submarines, 8 submarines delivered to Pakistan by China. एक ही बहुत है. ग्वादर पोर्ट इज ओनली सफिशिएंट. सबमरीन्स उनको दे रहा टू डेटर द इंडिया. हाँ, टू डेटर इंडिया. एक्चुअली दिस इज टू डेटर इंडिया. इंडिया को डराने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए. 8 submarines delivered to Pakistan by China. Full stop. Next point. Chinese Shipping Industry Corporations, CSIC, Chinese Shipping Industry Corporations, Chinese or China Shipbuilding Industry Corporation, CSIC, also set up a training center in Karachi. CSIC, China Shipbuilding Industry Corporations, CSIC also set up a training center in Karachi to train Pakistan naval. Next point. Or you can change the paragraph. Or you can change the paragraph. क्या हो गया? Change the paragraph. These activities of China are a serious security. These activities of China are a serious security threat to India. Since China is encircling India into the Indian Ocean. Since China is encircling India into the Indian Ocean. Next point. Chinese ports in Bangladesh, India into the Indian Ocean. Encircling means घेराव करना उसका. Next point. Chinese ports in Bangladesh and Myanmar as well as armed forces of Sri Lanka which get help from the China, as well as armed forces of Sri Lanka which get helps from the China, along with construction of Hambantota port by China. Along with construction of Hambantota port by China. Hamban, H-A-M-B-A-N, Hambantota. T-O-T-A, Tota, Hambantota port by China. And where is Hambantota port? Is in Sri Lanka. And that is in near the southern region, southeast region.
when we have done Sri Lanka, we have seen this, right? That Colombo port and Hambantota port is constructed by the China. So this Bangladesh port है उनके पास, right? They are providing assistance to the Myanmar also, training in Sri Lankan armies also, giving vessels, patrol vessels, aircraft carrier to army of Sri Lanka. They are developing the Hambantota port. Now they are come to the Gwadar port. So through this they are encircling India, and which is considered as a security threat to India. Is this clear? Yes, bilkul. It is a very serious threat. Next point. China would build a military base. Would build a military base near Gwadar. China would build a military base near Gwadar on the Jiwani province, peninsular, on the Jiwani peninsular. J-I, Javani नहीं, Jiwani. J-I-W-A-N-I, Jiwani peninsular. Which is only 400 nautical miles away, which is only 400 nautical miles away from Indian western border of Gujarat. ठीक है. Next point. Gwadar port was meant to be commercial port. Gwadar port meant to be commercial port. Gwadar port meant to be commercial port, but presence of Chinese warship in the area warship in the area implies Chinese warship in area implies a security threat to India's western border. A security threat to India's western border of Gujarat. A security threat to India's western border of Gujarat and to India's investment in Chabahar port. That is also been under threat. And Chabahar port is in Iran. That is, and through Iran it is connecting Afghanistan. Now we will do Afghanistan. क्या छूट गया? In Chabahar port, C-H-A, Chabahar, B-A-H-A-R. No, in Iran. Chabahar port is in Iran. इंडिया बना रहा है पोर्ट. यस, दिस आपने लिखा ना, वेस्टर्न बॉर्डर एंड टू इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन चाबहार पोर्ट. दिस इज ग्वादर पोर्ट. यस और नो. अब यहां पर चाइना अपना बेस बनाएगा. दिस इज चाबहार पोर्ट इन ईरान, जिसके थ्रू ये कनेक्टिविटी अफगानिस्तान में और उसके थ्रू वो सेंट्रल एशिया में इंडिया विल एंटर एंड डू इट्स बिजनेस. तो इस थ्रेट को यहाँ जो आपका जो पोर्ट है फ्रॉम द मुंबई, इट इज कनेक्टिंग अ पोर्ट. यस और नो. तो दिस विल ऑल्सो थ्रेट ना, यहाँ पर ये बनाएगा इस एरिया में और इसका प्रेजेंस यहाँ होगा, तो यहाँ पर इसके बिजनेस थ्रेट पे है ना, कंट्रोल हो जाएगा कमर्शियल. यानी इट विल रेस्ट्रिक्ट द इंडियाज एंट्री इनटू द अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया और थ्रू वेस्ट एशिया एंड थ्रू अफगानिस्तान इंडिया इज एंटरिंग इनटू द सेंट्रल एशिया. तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया, वहां से फिर रसिया में एंटर कर जाएगा. तो इंडिया का जो ट्रेड है रसिया के थ्रू बाय दिस सी पोर्ट कैन बी मिनिमाइज मैरीटाइम. So this is also been threatened by the stations of Chinese naval and military in the Gwadar port.
ठीक है, इज दिस क्लियर? एनी डाउट? नो? तो दिस इज ऑल फ्रॉम द इंडिया पाकिस्तान. Now we will see the India Afghanistan. Any issue? इसका मैं भी नाम भूल जाता हूँ ये. नहीं, वो एक तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है. हाँ वो है, ठीक है. इसका है एक नवी मुंबई करके ऐसा कोई पोर्ट है, वो आपको मिल जाएगा वो मैप में. ठीक है. तो नाउ अफगानिस्तान. अब बताइए अफगानिस्तान के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? व्हाट डू यू ऑल नो अबाउट द अफगानिस्तान? Relation of Afghanistan, India and Afghanistan, whether there is a good relations or there is a bad or ups down relations with good relations. There is a after taking over of Taliban to Afghanistan 2021 में जब US ने अपने this soldiers they have withdrawn and taking off Taliban's control of Afghanistan, there is a relations been little bit you can say that deteriorated between the India and Afghanistan. Yeah, yes, peacekeeping. Yes, peacekeeping, and it has supported Afghanistan government at that time also, and the US in cleaning this Taliban and military base in the Afghanistan. But though the relation has been deteriorated during that period, now it's been normalizing. Now it's in a phase of where the relation has been normalizing, but still the India has not recognized Taliban government in Afghanistan, right? It is because India's policy, which we have seen in the NAM, which is a product of the Indian national movement, that it favors an independence of every nations, right? So it favors that in Afghanistan the government should be of democratic nature, it should not be a military nature. Okay, but due to this you can say at deteriorations in the relations after the takeover of Taliban to the Afghanistan, उन्होंने जब 2021 में वो जो आ गया उसके बाद तालिबान आ गई वहां पर और कैप्चर कर ली अफगानिस्तान को. उस दौरान भी ड्यूरिंग दैट पीरियड द इंडिया हैज प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, वीट प्रोवाइड कराना, कोविड में आपका वो टेस्ट किट प्रोवाइड कराना टू द पाकिस्तान, एंड प्लस ड्यूरिंग दैट पीरियड आप शायद याद हो, यू हैव बीन सीन थ्रू द न्यूज़पेपर ऑल्सो कि लोग भाग रहे थे वहां से, कोई एरोप्लेन में लटक रहा था समथिंग, राइट? सो इंडिया हैज प्रोवाइडेड a passage, a safe passage of Afghanistan national to India, lifted the Afghanistan from many Sikhs were lifted from Afghanistan and they were been given a shelter in this and given a safe passage to this on a humanitarian ground. वहाँ जब भी अर्थक्वेक या किसी तरह की घटना में it has given a wheat provide, right? और during this period India has asked special request to Pakistan that they should give a clearance to transport wheat into the Afghanistan. Are you getting my point? This is a development after 2021 when the US Army जब वहां से withdrawal कर लेती है. तो process of withdrawal of US Army started under the Barack Obama. Obama ने announce किया था that now we will withdrawn our army from stations in the Afghanistan. That has been completed during Biden. ठीक है? So this is the process of American withdrawal. लेकिन हम पार्लियामेंट बनाया. मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको अब दूसरी चीज दिखाता हूं. अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंडिया के इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
इंडिया चाहबार पोर्ट बना रहा है विच इज इन ईरान. थ्रू चाहबार पोर्ट it will give a passage into the Iran, and through Iran it will go to the West Asia, Iraq, or Saudi Arabia and all this, right? And through here it is connecting a road connectivity into the Afghanistan, and through the connectivity making railways constructions, infrastructure, railways in dam, Friendship Dam, then there is a road connectivity. ठीक है, पार्लियामेंट अभी पार्लियामेंट इंडिया ने ही बना करके उन्होंने दिया था, right? So if we see, so this is a road connectivity. If you see, this is a road connectivity. This is a port, Chabahar port in Iran. अब यहाँ से road connectivity बना रहे हैं, तो see, this is Zarans to Delaram, there is a road, highway, Zarans to Delaram highway. आप अफगानिस्तान का वो निकालिए, the physical map, और this आप ही लेकर नहीं आए. It will help. आप लोग importance नहीं समझते हैं एटलस का. It will help you lot. जिसमें ज्योग्राफी या इंटरनेशनल रिलेशंस आप वो खोल कर देखिए. कैन यू शेयर एनीवन इफ यू हैव टू, कैन आप उनके साथ शेयर कर लीजिए, आप उनके साथ देख लीजिए, जस्ट शेयर ना, बट प्लीज कम अप विद द एटलस. अफगानिस्तान मिला आपको, तो डू यू आर यू इन पोजिशंस टू, are you in a positions to find, जय हिंद गौरव जी, जेरान्स एंड डेलाराम. देखिए इस वाले इलाके में होगा, नॉर्थ वेस्टर्न इलाका में, देखिए नॉर्थ वेस्टर्न इलाका में ऑफ अफगानिस्तान मिला, जेरान्स एंड डेलाराम. डिड यू फाइंड? अफगानिस्तान का पेज मिला या नहीं? जेरान्स से डेलाराम there is a connectivity constructed by the India, and through this highway, if you see this highway, this will connect Afghanistan and Iran also. So it means from चाहबहार पोर्ट जो इंडिया बना रहा है आपका ईरान में, और वहां से वो ट्रांसपोर्ट करेगा अफगानिस्तान में थ्रू दिस हाईवेज. तो चाहबहार से वेस्ट एशिया में भी एंट्री मिल रही है थ्रू ईरान, इराक एंड ऑल दिस, एंड थ्रू कनेक्टिंग टू द अफगानिस्तान इट विल एंटर इनटू द सेंट्रल एशिया ऑल्सो, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, विच इज अ नेचुरल गैस हब रिसोर्सेज, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान. सो दीज आर द हब ऑफ अ नेचुरल गैस रिसोर्सेज. तो वहां भी उसको एंट्री है. डिड यू सी दिस? नहीं मिला? लेकर आइए मैप पे. किसे नहीं और किन्हें नहीं मिला? अफगानिस्तान ही नहीं आपके मैप में, तो उसमें है जेला. एक बड़ा सा नहीं है इसमें, तो यही दिक्कत है ना. यू शुड अब इसमें दिखेगा कैसे? दिस इज पाकिस्तान ना, म्यांमार, ये अफगानिस्तान है ना. मज़ार शरीफ दिख रहा है, तो जारान से ऊपर है डेलाराम. देखिए ना, जारान से नॉर्थ ईस्ट में देखिए देयर विल बी अ डेलाराम. मज़ार शरीफ दिखा आप लोगों को? मज़ार शरीफ एकदम नॉर्थ में ऊपर देखिए, है ना, उसी के पास में है, जस्ट बिलो द, मिला, उसी के पास में है. डेलाराम, जरान डेलाराम. यस, आई विल सजेस्ट यू गो विद दिस, नॉट ये ऑक्सफोर्ड नहीं, एटलस का स्टूडेंट, सॉरी नॉट एटलस, एक और कौन सा है, नहीं मैप नहीं, एक ऑक्सफोर्ड आता है, एक और आता है ओरिएंट, सॉरी ओरिएंट ब्लैंकसोन. गो विद द ओरिएंट ब्लैंकसोन स्टूडेंट एटलस. ऑक्सफोर्ड, हाँ दिस वन.
अपडेट किया हुआ इन्होंने। स्टूडेंट है या कौन सा है? ओरिएंट ब्लैक स्वॉन स्टूडेंट एटलस है, एक बार देख लीजिएगा। इट हैज अ वेरी इम्पैक्ट। और किसी और का मैप मत लीजिए। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पब्लिश्ड मैप फ्रॉम द कोचिंग्स, नॉट रिक्वायर्ड। गो विद द ओरिजिनल। उसमें आपको, क्योंकि दिस मैप विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑल्सो कि कैसे सिक्योरिटी कैसे इंडिया को हेल्प करेगी। जब तक आप समझेंगे नहीं ना कि कनेक्टिविटी कैसे देगी, क्या करेगी। वाई आई एम पोस्टिंग ए मैप in over this just to let you give an idea okay, how it is going to help. So this will help you in everything. Okay, so here we have discussed. So this is the prospect. Okay, through it is building. So we have seen the connectivity. तो connectivity में देखिए parliament भी बनाया है. India has through the parliament pipelines, तापी pipelines, right? TAPI, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, India, but that does not come into being because of the Pakistan ने allow नहीं किया. Tapi pipeline, there was a Tapi pipeline. Is this clear? So these are the investment of India into the infrastructure building आप कह सकते हैं. And at the same time with the infrastructure, that is building parliament, building road, railways, and India has also developed an institutional development, schools बनाना, hospitals बनाना, hospital training center, medical colleges. So this is also India not only investing, सिर्फ उसका investment infrastructure में invest नहीं कर रहा अफगानिस्तान में, रेल या रोड बनाना, institutional development भी कर रहा है, schools बना कर दे रहा है उन्हें, अरे गटे हॉस्पिटल्स। सो जहाँ पर ट्रेनिंग हो सके, जहाँ पढ़ाई हो सके, उसके लिए भी वो करके इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन दिस. यस, इंडिया दे आर ट्रेनिंग, सो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग इन, यू कैन से दैट मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी दे रहा है, ठीक है. देन दे आर हेल्पिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, क्योंकि अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ this terrorist group and because of the bordering with the Pakistan has been most affected, ठीक है. So they are been given humanitarian ground पे भी उनका help कर रहा है. Are you getting my point? We share a ancient relationship, बानियान ancient IVC Indus Valley civilizations का relationship अफगानिस्तान से, तक्षशिला यूनिवर्सिटी आ गया आपका, तो वो हो गया बानियान. बुद्धिज्म से रिलेटेड हम है. हमारे मॉडर्न इंडिया में भी रिलेशन रहे हैं. खान अब्दुल गफार खान, विच इज नोन एज अ फ्रंटियर गांधी, इफ यू कैन नो, also from the Afghanistan, the first foreign national to be awarded a Bharat Ratna, that is Khan Abdul Ghaffar Khan. He is also known as a frontier Gandhi. आपने पढ़ा होगा रेड शर्ट रिवॉल्यूशन, रेड शर्ट मूवमेंट या रिवॉल्यूशंस क्या है, that is of the Khan Abdul Ghaffar Khan, and that is frontier. And because of this you have also read it, Northwest Frontier Province. Northwest it is a province under the British and which is of Afghanistan region, ठीक है. और अफगानिस्तान से ही, हिंदू कुछ से ही अफगानिस्तान के थ्रू ही एंट्री हो रही थी. जितने भी अटैकर्स, चाहे आप 1100 में अटैक्स देख ले, खिलजी का अटैक देख लें, या उससे पहले आप मोहम्मद तुगलक का, और भी जितने लोग हैं, यस, वो सब इसी रूट से आ रहे थे अटैक करने. सो दिस इज एन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंडिया ऑल्सो, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में बना है, उससे पहले तो वो इंडिया का ही पार्ट था. यानी इंडिया बिफोर 1947 शेयरिंग बाउंड्री विद द अफगानिस्तान, एंड इन ब्रिटिशर्स established Afghanistan, that is Northwest Frontier Province, as a buffer state from getting from the Russia, कि रसिया अटैक नहीं करते, तो अफगानिस्तान को बफर स्टेट की तरह यूज कर रहा था. So this is the historical connectivity between India and Afghanistan. 1947 से हमारे बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टूट गया, आफ्टर 1948 स्पेशली, जब से वो हम POK, हम गिलगित बाल्टिस्तान हमने लूज कर दिया है. बट बिफोर दैट, सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल
1946-47 वी हैव ए डायरेक्ट कांटेक्ट विद अफगानिस्तान. हम ट्रेड भी कर रहे थे. मेसोपोटामियम सिविलाइजेशंस अगर आप देखते हैं तो दैट इज अ रूट थ्रू विच ये मेसोपोटामियम आपका सिविलाइजेशंस का ये इलाका. यस और नो? तो दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर इट डू अ ट्रेड फ्रॉम इंडिया. तक्षशिला भी आपको यहाँ मिलेगा, राइट? आप इंडस वैली सिविलाइजेशंस के कुछ डिस्कवरीज यहाँ भी मिले हैं, एक दो. अफगान अगर आप एंशिएंट में पढ़ते हैं एरियाज कहाँ कहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो एक्सपेंडेशंस है वो कहाँ था, तो उसका प्रेजेंस अफगानिस्तान में भी आपको मिलता है. तक्षशिला इज इन नहीं, अफगानिस्तान. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? yes or no? So this is, there is an historical connections between India and Afghanistan. ठीक है? So we have seen its connectivity, we have seen the historical perspective. ठीक है? We have also seen how recently there is a development in Afghanistan after the Taliban had taken over the government of Afghanistan. तो लेकिन अफगानिस्तान को तालिबान गवर्नमेंट को इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, नॉट कंसिडरिंग एज एन legitimate government जिसके साथ वो negotiate कर सके, but they are still cooperating for the on the humanitarian ground. So अफगानिस्तान और इंडिया का कलेक्शन बहुत पहले का है. हिस्ट्री में भी जब आप पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड. आज भी रिलेशंस बहुत अच्छा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कल्चरल रिलेशंस भी है हमारा उनके बीच में. कल्चरल टाई ऑल्सो. वी विल सी, यू विल राइट डाउन व्हाई अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. स्ट्रैटेजिक पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. It, yes, it, and the second thing, it give passage to the India into the Western Asia and Central Asia ना. और अब मान ली हमने POK अगर ले लिया, suppose that POK comes under the control of India, so that give a direct connectivity to Pakistan through this route. अफगानिस्तान में डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी. That Gilgit-Baltistan is sharing a very narrow boundary with the India and Pakistan. अगर आप देखें तो आपको दिखेगा. So it is also important in that respective also. ठीक है? डेवलपमेंट परस्पेक्टिव से भी है. They have developed very much. India has invested many projects in Afghanistan. Is this clear? Any doubt? लिखिए इंडिया अफगानिस्तान. So history you can write on, मतलब the connection is from the ancient until medieval. This is good. Now write on that in 2011 we will start with the current government and the recent development. ठीक है? In 2011 India and Afghanistan has strengthened their relation in 2011. India and Afghanistan has strengthened their relation by signing inverted comma में लिखिएगा strategic partnership agreement. Strategic partnership agreement, SPA in the bracket, which includes, now write down the points under SPA. SPA, Strategic Partnership Agreement, which includes, first point, assistance to help rebuild continue कीजिए, assistant to help rebuild Afghanistan's infrastructure and institutions. rebuild Afghanistan's infrastructures and institutions. Example आप देख लीजिए, Parliament of the Afghanistan, connectivity from Zaranj to Delaram road connectivities, road connectivity from Chabad to port. This is an infrastructure development. Institutional development, schools, medical colleges, hospitals. Clear?
वहां बनाया है, ये सब कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट, encouraging investment in Afghanistan's natural resource, encouraging, second SPA point, encouraging investment in Afghanistan's natural resources, providing duty free access, encouraging investment in Afghanistan's natural resources, comma, providing duty free access to Indian market for Afghanistan export, duty free access to Indian market for Afghanistan export. You understand this point? कि जब भी जैसे आप दुबई जाते हैं तो दुबई से अगर कोई सामान लेकर आते हैं तो यू हैव टू पे अ ड्यूटी, एयरपोर्ट पे आपको ड्यूटी देना है। बट अफगानिस्तान से अगर कुछ आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो जब आप अफगानिस्तान से, तो दैट विल बी अ ड्यूटी फ्री। तो दिस विल इनकरेज टू यूज द इंडियन मार्केट। SPA, दिस इज एन स्ट्रेटेजिक पार्टनर एग्रीमेंट। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ, बट ये उसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ये पॉइंट रखी गई है कि हम इनकरेज करेंगे कि आप वहां से लेकर के आइए और ये कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, access to Indian market for Afghanistan export, support from, हाँ third point, support from Afghanistan led LED, support from Afghanistan led LED, comma led LED, comma Afghan owned OWNED, comma broad based Afghan owned, comma broad based and inclusive process of peace and reconciliation, inclusive process of peace and reconciliation, 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 reconciliation। ठीक है, दिस इज द थर्ड पॉइंट अंडर बिन SPA, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, सपोर्ट, सॉरी आपने क्या लिखा है, सपोर्ट फ्रॉम नहीं, इट्स ए सपोर्ट फॉर, FOR and AN, not from, support for an Afghan-led, Afghan-owned, broad-based and inclusive process of peace and reconciliations. It means if Afghanistan, they are struggling to establish a peace, support for FORAN and Afghan-led, means if Afghanistan initiate any peace process, so India will support. If they initiate any reconciliation, means rehabilitation, so India led, Afghan LED, Afghan space led, comma Afghan owned, comma LED led, अगर वो पहल करता है, अफगान पहल करता है अगर, तो उसको हेल्प करेगा इंडिया, it gives support from India. Yes, let's suppose that if Afghanistan, they now say, or there is a movement to establish a democratic government in Afghanistan, तो India will support because there is a point in SPA. क्या प्रॉब्लम है पीछे बताइए? लेड का मतलब है टू लेड, LED लेड। आपने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है? वो लीड नहीं, LED लेड।
but there was no movement now. If suppose the Ghani Yusuf Ghani come and there is a process of election should be established by this government, so India will help to establish a peaceful government, peace in the society. No, if the assistance was asked, right? Because as we all know that our international relations or a diplomatic relations or a smooth relations with any other nations can only be established when there is a peace and stability in the region. जब तक वहाँ पर stability नहीं रहेगी, peace नहीं रहेगा, तो आप trade नहीं कर सकते हैं, आप relation establish नहीं कर सकते हैं. You cannot say that it is a good relation or bad relations because it was not a stable. जैसे आप देख लिए in Maldives. So internally Maldives was disturbed, coup होता रहा. So in Myanmar is also, Sri Lanka is also, we have seen. So there was a cut off of relations क्योंकि वो आप उनके पास है ही नहीं any base government or any stable government to negotiate. So once they've been asked, they will be done. So it says कि जब भी अफगानिस्तान ऐसा कोई peace process या peace establish करने के लिए Afghan led, not India led. It means that the initiative would be done by Afghanistan, Afghan owned, meant that would be totally by the Afghanistan. So in and broad based, it means it will be not a narrow, it should be a holistic. Then India will assist or support in establishing peace and reconciliation in the region. जी बताइए, ठीक है? अब आपका confusion दूर हुआ? आपका ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए. So you have written SPA third point, right? Now fourth point, advocating the need for a sustained and long term, advocating the need for, need NEED, need, जरूरत, for a sustained and long term commitment sustained and long term commitment to Afghan by the international community. ठीक है? So this is a point under the strategic partnership agreement in 2011 which gave a base to the relations, right? Now write down heading why Afghanistan is important. Write down Afghanistan important for India. We are writing the reason. Afghanistan important for India. पहला तो आप लोगों को पता है, that is economic significance. नहीं पढ़िए उसको. एडवोकेटिंग, एडवोकेट करना मीन्स व्हाट डू मीन बाय, मतलब क्या मीन्स इंटरनेशनल कम्युनिटी में अफगानिस्तान के लिए सपोर्ट सीख करेगी इंडिया कि देयर शुड बी अ इफ एनी कूप और अगेंस्ट, तो दैट शुड बी इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड सपोर्ट. इंडिया विल एडवोकेट. ठीक है? एनीथिंग एल्स? तो वी आर सीइंग व्हाई अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट इज बेसिकली इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. हम पहले आते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. पाइपलाइंस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं. इट विल गिव अ वे इंडिया टू वेस्टर्न एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया. तो दिस इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्योंकि अभी सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया में इंडिया को पाथ सिर्फ यहां से ही मिल सकता है. अगर ये भी क्लोज हो जाए और ये भी क्लोज हो जाए तो इंडिया विल नॉट बी इन ए पोजिशंस डायरेक्टली टू डू ट्रेड विद द सेंट्रल एशिया क्योंकि पास मिलेगी ही नहीं, पाकिस्तान देगा नहीं, एंड इन द वेस्टर्न एशिया बिकॉज इफ देयर इज नो पोर्ट तो इट हैज टू डिपेंड ऑन द अदर्स. इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी. दैट इज अ सॉफ्ट, यूजिंग अ सॉफ्ट पावर. तो इंडिया यूजिंग बोथ पावर, सॉफ्ट एंड हार्ड.
इकोनॉमिकली भी वहां पर कर रहा है हेल्प, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी कर रहा है, एंड सॉफ्ट पावर ऑल्सो यूजिंग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, वीट प्रोवाइड करना, मीन्स जब भी कोई क्राइसिस हो जाए तो उसमें प्रोवाइड करना, उनको एयरलिफ्ट कर, मतलब गिव अ सेफ पैसेज, राइट. सो इंडिया यूजिंग बोथ द पावर इन अफगानिस्तान बिकॉज अफगानिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, द गेटवे टू द सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशियाज which has not been possible without the support of Afghanistan. Is this clear? And Afghanistan is India's one of the largest trading alliance. ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है they are now against enemy. Taliban has not supported abrogations of 370. I mean has not against the abrogations because जबकि पाकिस्तान ये बिलीव कर रहा था कि तालिबान अब पाकिस्तान के साइड से होगा और इंडिया के अगेंस्ट में बात करेगा when 370 was abrogated, but Afghanistan has given a statement it is India's internal matter. It means पाकिस्तान का जो क्लेम था अंडर द कश्मीर that is also not been accepted by Taliban, क्योंकि उसने कह दिया कि इंडिया का ये इंटरनल मैटर है, we are not going to interfere. So totally it means now they have considered Kashmir as an India's part. ठीक है, लिखिए. तो फर्स्ट लिखिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. सो अंडर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फर्स्ट इज पाइपलाइन रूट्स. पाइपलाइन रूट्स, ठीक है. सो पाइपलाइन रूट है बिकॉज इन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया नेचुरली रिसोर्सेस, अबंडेंस ऑफ, अब यहाँ पर बहुत सारे गैसेस और वो मिल रहे हैं, आप देखिए तो नेचुरल रिसोर्स, यस, तो उसके लिए पाइपलाइन भी बिछ रहा है. सेकंड पॉइंट जी, तो अलग अलग तरीके से जा रहा है, वो जो रूट हमने देखा ना वो सब उसी का चल रहा है जो कनेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान में. अफगानिस्तान एक तो तापी पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन. जब पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया रूट तो इट इज नॉट बिन डन. सो राइट डाउन, एक ब्रैकेट में लिखे तापी, यू हैव टू डू, आई मीन नाउ यू नीड टू फाइंड अबाउट व्हाट इज तापी और कैसे कनेक्टिविटी है. ऑन कीजिए, ऑन द एसी. नेक्स्ट, so first is pipeline route, because of the pipeline route it is important. Second, regional balance of power. हाँ, मतलब आप बता सकते हैं due to the pipeline route it is important. Second is regional balance power, right. इसमें लिखिए that India needs Afghanistan, India needs Afghanistan India needs Afghanistan to counter Pakistan. और पाइपलाइन में एक बार आप तापी को देख लीजिएगा, दैट इज इंडिया हैज साइन तापी, ठीक है. व्हाट इज तापी, व्हाट इज द रूट. Next point, that Afghanistan under the regional balance. So you have written that India need Afghanistan to counter Pakistan. Full stop. Next, Afghanistan is tied to India's vision. Tied, T-I-E-D, tied. हाँ बिल्कुल उसी में next point. Tied to India's vision. टाइड, T-I-E-D, जोड़ बंधा हुआ, टाइड टू इंडियाज विजन ऑफ बीइंग रीजनल लीडर एंड अ ग्रेट पावर, ऑफ बीइंग रीजनल लीडर एंड अ ग्रेट पावर. ठीक है, क्योंकि सार्क में भी है वो, यस और नो, एंड वेरी गुड. तो सार्क कैन बी यूज एज एन टूल्स टू बिकम अ सुपर पावर.
So India, if India wants to become a great power or leader of the region, so Afghanistan is also important for that. Okay, this is the second reason for being an importance. Third लिखिए, that is strategic significance of Afghanistan. Third reason is strategic significance of Afghanistan. नहीं, इकोनॉमी में आपने पाइपलाइन लिखा, then you have written regional. So this is नहीं, हाँ second, yeah, second, yes, second. Strategic significance of Afghanistan. अब write down कैसे, how. So we have seen it is a gateway to सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया भी, तो इसलिए स्ट्रैटेजिक है. सो अफगानिस्तान इज अ गेटवे टू एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया, एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया, Central Asia and a significant oil and gas reserves, a significant oil and gas reserve and has a rich source of rare earth materials and have a significant and has a rich of source of rare earth materials. ठीक है, इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ स्ट्रैटेजिकली. नेक्स्ट लिखिए अंडर इंपॉर्टेंस. हाँ नेक्स्ट पॉइंट. नो नो, इंपॉर्टेंस ऑफ, आपने पहले इकोनॉमिक में 2 लिखा, देन यू हैव रिटन स्ट्रैटेजिक. नाउ नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंस आपको इकोनॉमी, पॉलिटिकल, ट्रेड एंड कॉमर्स सबका मिक्सचर में बता रहा हूँ कि कैसे इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान. तो हियर वी आर राइटिंग कमर्शियल इंपॉर्टेंस से भी है वो. तो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सॉरी इंडिया एंड अफगानिस्तान, नॉट पाकिस्तान. So bilateral trade between India and Afghanistan crossed over 1.5 billion US dollar. Crossed over. Bilateral trade between India and Afghanistan crossed over 1.5 billion US dollar mark. Mark, M-A-R-K, mark. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब पहले से ग्रो हो गया सिग्निफिकेंटली. अर्लियर इट वाज नॉट 1.5 आल्सो, बट नाउ इट हैज क्रॉस्ड द मार्क. नेक्स्ट पॉइंट, अफगानिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया थ्रू अफगानिस्तान, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट अंडर द सिग्निफिकेंस, अंडर द सिग्निफिकेंस. आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा इसको और इजी बनाया, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. आपने अभी लिखा है ना दैट बायलैटरल ट्रेड, राइट, बायलैटरल ट्रेड आपने लिखा है ना, तो मेक इट इज ए एंड बी, और जो सेकंड आपने लिखा था दैट पॉइंट स्ट्रैटेजिक. थर्ड पॉइंट कर दीजिए कमर्शियल रिलेशन ड्यू टू कमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस. ड्यू टू कमर्शियल ऑल्सो अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट. नहीं समझ रहे हैं? First point is why Afghanistan is important. First, economic, due to economic, pipeline and regional balance. Second, strategic. Third लिखिए due to commercial relations. तो commercial में आपने एक लिख लिया है a trade between both. समझ गए? अब second लिखिए under the commercial. Now you are getting. मैंने पहले सोचा कि आपको इकट्ठे सब बता दूं. नाउ लेट बाइफर्केट, कि अलग अलग
एरियाज में। तो सेकंड इज राइट दैट अफगानिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया थ्रू वाघा अटारी बॉर्डर। अफगानिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया थ्रू वाघा अटारी बॉर्डर अंडर वाघा VAGHA वाघा अटारी बॉर्डर। वाघा इज इन पाकिस्तान, अटारी इज इन इंडिया, ठीक है। वाघा अटारी बॉर्डर अंडर नाउ राइट डाउन अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट TRANSIT ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट APTA APTA ब्रैकेट में लिखिए APTA। ठीक है। नाउ अगेन इन द सेम हेडिंग कमर्शियल थर्ड पॉइंट Afghanistan in collaboration with India, Afghanistan with collaboration with India launched Afghanistan with collaboration means with partnership of India launched a dedicated air freight corridor, dedicated air freight corridor FREIGHT freight corridor in 2017, air freight corridor FREIGHT in 2017. Do you understand the meaning of freight corridor, air freight corridor? अभी तो लिखा आपने एयर फ्राइट कॉरिडोर, यानी एयर चैनल के थ्रू सिर्फ सामान ले जाने के लिए कॉरिडोर बनी है, उससे कमर्शियल प्लेन्स नहीं जाएंगे उस कॉरिडोर से, ओनली द गुड्स विल बी ट्रांसपोर्टेड। जैसे रेलवे में आपने देखा होगा दैट रेलवे हैज आल्सो आफ्टर 2014-15 दे हैव आल्सो गिवन अ डेडिकेटेड फेराइट कॉरिडोर, कि कुछ रेल रूट्स ऐसे बन रहे हैं जिसपे सिर्फ कमर्शियल गाड़ियां ही, गुड्स ट्रेन ही चलेंगी, उस पर पैसेंजर्स या मतलब पीपल्स ओरिएंटेड ट्रेन्स नहीं चलेंगी, जिससे कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जाएगा। तो वैसा ही एक इंडिया और अफगानिस्तान ने भी एयर कॉरिडोर बनाया विच इज डेडिकेटेड टू फेराइट ओनली, मीन जहां सिर्फ उस कॉरिडोर से इंडिया से अफगानिस्तान या अफगानिस्तान से इंडिया ओनली इट विल बी ट्रांसपोर्टेड गुड्स थ्रू द एयरप्लेन्स, एयरवेज, समझ गए। पर FREIGHT इट्स प्रोनाउंस एज फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो अब एक देश से अगले देश जाने के लिए तो गवर्नमेंट ही एग्रीमेंट करेगी ना, अब वो उसको कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी मिल जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो कॉरिडोर तो गवर्नमेंट बनाएगी, भेज सकता, आप समझ नहीं रहे हैं, डील तो गवर्नमेंट ही करेगी, समझ गए। अब रिलायंस के कपड़े जाएं, बाटा के जूते जाएं या टाटा का स्टील जाए, लेकिन वो फेराइट कॉरिडोर यूज होगा, ठीक है। अब उसमें कौन से एयरलाइन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, साइन किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये दो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे, एयर फेराइट कॉरिडोर, जहां से हम माल को ट्रांसपोर्ट कर सकें, गुड्स को ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, समझ रहे हैं। तो उसमें तो गवर्नमेंट कोई भी कर रहा था, थोड़ी कि गवर्नमेंट अब अफगानिस्तान में जूते चाहिए तो गवर्नमेंट बना कर देगी यहाँ से, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी कर सकता है, लेकिन वो डेडिकेटेड फेराइट है। अब तो ये इतना डिटेल देखना पड़ेगा, डिटेल देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 2017 में साइन किया इन्होंने। नेक्स्ट इन फरवरी 2019 अंडर द दिस कॉपरेशन कमर्शियल वी आर राइटिंग,
19 Afghanistan began export to India. Afghanistan began export to India through the Chabahar port in Iran. Through the Chabahar port in Iran. This is the first time, continue कीजिए point after full stop. This is the first time Afghanistan has exported goods. This is the first time Afghanistan has exported goods to India, comma, bypassing Pakistan route. Bypassing पाकिस्तान रूट. अब देखिए चाबहार पोर्ट से करने के लिए उसे पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है. मैप देखिएगा अगर तो चाबहार डायरेक्टली अफगानिस्तान टू चाबहार पोर्ट और चाबहार से डायरेक्ट मुंबई पोर्ट. इट मींस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019 दे हैव बाईपास द पाकिस्तान रूट इधर एयर और अटारी बॉर्डर. एक बात और आपको बताऊं, अफगानिस्तान जो अटारी बॉर्डर आपने लिखा ना दैट दे आर एक्सपोर्टिंग, तो पाकिस्तान अलाउज ओनली एक्सपोर्ट टू इंडिया. क्या आप इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हो थ्रू दैट रूट, बट यू कैन नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग थ्रू दैट रूट फ्रॉम इंडिया. वहां से ट्रक्स खाली आनी चाहिए इंडिया से. अफगानिस्तान से ट्रक में आप जो चाहे ले जाकर दो, लेकिन जब रिटर्निंग में आओगे वहां से वो रूट को यूज करते हुए दैट इज अटारी वाघा बॉर्डर, so the trucks should be empty. This is on this conditions Pakistan has allowed a trade between India and Afghanistan through the Atari border. Are you getting my point? समझ रहे हैं? जैसे आपने पॉइंट लिखा है ना कि वो लैंड रूट में वाघा अटारी बॉर्डर को यूज करता है टू एक्सपोर्ट, दैट ओनली बी यूज ओनली फॉर द एक्सपोर्ट, नॉट फॉर इम्पोर्ट. वहां से अफगानिस्तान तो इंडिया, लेकिन जब इंडिया में कोई भी जैसे डेट्स आ रही है अफगानिस्तान से, ठीक है, तो डेट्स आने के बाद या कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा तो यहाँ पे ट्रक्स एम्प्टी हो गई. अब यहाँ से ट्रक्स खाली जाएंगी, कुछ लेके नहीं जा सकते आप इंडिया से, और लेके जाओगे तो ये रूट यूज नहीं कर सकते हो. हाँ चल रहा है, ट्रेड चल रहा है अफगानिस्तान से. तो इसीलिए फिर उन्होंने डेडिकेटेड एयर फ्राइट कॉरिडोर बनाया, जिसकी बात चल रही है बनाने की. फिर चाबहार पोर्ट से तो अब पाकिस्तान का कोई भी, अब एयर फ्राइट कॉरिडोर जब बनाएंगे उसमें भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, क्योंकि उनका आप एयर स्पेस यूज करोगे. अब वो हाइट का एग्जैक्टली मुझे ये नहीं है, देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है. तो यूज कर रहा है आपको. तो अगर ये चाबहार पोर्ट जो 2019 में शुरू कर दिया इन्होंने टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, so they are now bypassing the Pakistan. Are you getting the point? Yes or no? Clear? हाँ, अब यहां से यही चैनल चलेगा, ठीक है. तो these we have written in the commercial, right? Now write down the next development cooperations. So why Afghanistan is important? So we are writing the reasons, development cooperations. और इसी में हम ये भी समझ रहे हैं कि that relations between India and Afghanistan is on what matters has been established. Development cooperations, ठीक है. अब आप कुछ ये देखिए, now you can see the, देखिए, now under the development cooperations India is building dam, सलमा डैम, सहतूत डैम. अब ये देखिए जारान डेलाराम हाईवेज है, we have seen. इसके नॉर्थ वेस्ट में सलमा डैम that is been developing by India. A new agreement has been signed to develop the Sahtut Dam in Afghanistan. So अब यहाँ पर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में भी वो इंडिविजुअल मदद कर रहा है. पार्लियामेंट बनाया, हाईवे बनाया, कनेक्टिविटी फ्रॉम हियर. नाउ दिस इज अ बॉर्डर बिटवीन Afghanistan and Iran. Now this will also connected to Chabahar port.
इंडिया बना रहा, मतलब चाबहार पोर्ट तक लाइए, फिर आप उसको वहां पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कनेक्टिविटी हो रहा है, डेवलपमेंट, राइट. So this is done. So you write the first point that India-Afghanistan development cooperations like Salma Dam in Herat province, Salma Dam, cooperations like Salma Dam in Herat province, comma, Parliament in Kabul, हरात, HERAT, एक मतलब हरात जगह है अफगानिस्तान में, ये वाला इलाका. सलमा डैम इन हरात प्रोविंस, HEART, हरात, HERAT, हेराट. अगर ब्रिटेन में हो तो आप इसको हेराट पढ़ेंगे, हेराट प्रोविंस, कॉमा, पार्लियामेंट बिल्डिंग इन काबुल, कॉमा, रोड प्रोजेक्ट इन निमरोज प्रोविंस, रोड प्रोजेक्ट इन निमरोज, NIROZ, कॉमा, कॉमा, रोड प्रोजेक्ट इन निमरोज प्रोविंस, and Nimroz, NIMROZ, Nimroz province, and India also established a hospital, India also established a hospital and runs midday meal scheme for Afghan school children. Runs, lunch नहीं, runs a midday meal scheme. हॉस्पिटल भी बनाया और इंडिया का जो मिड डे मील स्कीम है जो इंडिया यहाँ पर चलाती है, वो अफगानिस्तान स्कूल में भी मिड डे मील स्कीम चल रही है. हाँ, हॉस्पिटल, हाँ, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल्स वाज कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. India agreed to implement new project. India agreed to implement new project, Sahtut Dam, comma, Sahtut Dam, comma, and drinking water project for Kabul, and drinking water project for Kabul that would also facilitate irrigation. Kabul, that would also facilitate irrigation means वो एक तो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराएगा और वो ही हेल्प करेगा इरिगेशन में. फैसिलिटेट इरिगेशन. ठीक है, कैपिटल, अफगानिस्तान कैपिटल. वर्क हार्ड ऑन दिस मैप. खोलकर जो भी अब टॉपिक आप पढ़े ना उसको मैप खोल कर रखिए. ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशंस में यू नीड टू ओपन द मैप. स्किप करके कोई फायदा नहीं. अब आप जब पढ़ रहे हैं कोई एरिया आपने देखा तो उसको ढूंढिए. ठीक, अब उसके बारे में और जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा दिस स्टेट ऑफ मलक्का किन के बीच में जा रही है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कनेक्टिविटी है. स्टेट ऑफ गोमरोज, आप वहाँ पे मलक्का, उसके बाद फिर आप इधर हरमूज में आइए, स्टेट ऑफ हरमूज. तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है कैसे इंपॉर्टेंट है, राइट. अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपने पढ़ा क्योंकि ये कनेक्टिविटी कैसे कनेक्टिविटी दे रहा है. तो सेंट्रल एशिया से भी बॉर्डर लग रही है इसकी,
तभी तो वो बॉर्डर है, तभी तो वो कनेक्टिविटी दे रहा है। तो सेंट्रल एशिया से किन नेशन से है, ये हेल्प करेगा आपको। सेंट्रल एशिया आपको समझना होगा कि सेंट्रल एशिया है, नहीं समझ में आ रहा है गूगल में डालिए सेंट्रल एशिया कंट्री। गूगल का आजकल फैसिलिटी है, दे कैन प्रोवाइड यू द नेम ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्री। this through this you have to help. Second, go through the previous year papers कि मैप से related कैसे questions आ रहे हैं in the geography also and in this. So this will also help you understand because map is very important. ठीक है, चलिए, so you have written irrigation facility, ठीक है। Next point, under the development cooperation, that India's support up to Afghanistan during COVID-19 pandemic. In India supported Afghanistan during COVID-19 pandemic by providing made in India COVID-19 vaccine, by providing made in India COVID-19 vaccine under the COVID-19 vaccine under inverted comma लिखिए वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, वैक्सीन मैत्री वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। मैत्री मीन्स दोस्ती, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव ने कोविड-19 के, इसमें आपको पीपीटी किट भी दिया इंडिया ने, राइट, वो टेस्ट के लिए जाता है, फिर वो जो किट आता है पहला पहनने के लिए, वो वैक्सीन भी दिया जो आपका कोविड शील्ड डेवलप इज एन इंडियन डेवलप्ड वैक्सीन, सो दैट इज बीन प्रोवाइडेड। नेक्स्ट पॉइंट, इन अक्टूबर 2021 under humanitarian assistance और 2021 का पीरियड कौन सा है, कौन सा पीरियड है, कोविड, नहीं कोविड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, द पीरियड व्हेन तालिबान वाज टेकन ओवर द अफगानिस्तान। ये 21 का पीरियड वही पीरियड है जब अमेरिकन आर्मी चली गई थी और तालिबान हैज taken over Afghanistan. So during that period in the humanitarian, how they have helped. So in October 2021 on the humanitarian assistance, India made a formal request to Pakistan. India made a formal request to Pakistan to allow 50,000 metric tons of wheat, to allows 50,000 metric tons of wheat and life-saving drugs for the Afghanistan people, to ferried FERRIED, ferried overland into Afghanistan. People to be ferried, FERRIED, ferried overland into Afghanistan, means to give a passage to use the land route to transport this help to Afghanistan. हाँ, ठीक है। So this is on the cooperations background. Now write down under the cultural, on the matter of policy of culture, cultural relations, Afghan cultural relations. तो इस मैटर से हमने दोनों चीज कवर कर लिया, क्यों इंपॉर्टेंस भी है और रिलेशंस का बेसिस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट लिखिए,
and Afghanistan, India-Afghanistan cultural week, and India-Afghanistan cultural week. Week, WEEK, Saptah. Week was held in New Delhi, November 2017. Cultural India-Afghanistan cultural week was held in Delhi, New Delhi in November 2017. Next point. Awai Bande Amir. Amir, not Amin, it's R. Amir. Awai Bande Amir. Folk musical troupe. A folk, F-O-L-K. What is folk? Ancient folk, traditional. Folk musical troops from Bamiyan. F-O-L-K. A folk musical troops from Bamiyan province of Afghanistan. बामियान, BAMIYAN, ये बुद्धिज्म वाला इलाका है. बामियान, बामियान प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान. विजिटेड इंडिया ठीक है. Is it clear? So this is how the you can say that relations between India and Afghanistan or cultural and importance. ठीक है. Now we have been deal with the current development recently. जो development है that will be separately, और challenges क्या क्या challenges, right? So we'll do in the next class, or in the next class after this we will start the very next topic, India and China relations. थोड़ा सा ये बड़ा है, and after this, so this we have done India Bhutan Doklam issues, और ये हमने कर लिया था when we have done the Bhutan. नहीं, this is a power project developed by the China on the Brahmaputra region. ये देखिए 4 डैम बना रहा है. Then there will be a BCIM corridor, Bangladesh, China, India, Myanmar corridor connecting from Kolkata to Kunming. One Belt One Road initiative, Belt Road initiative, BRI initiative जो हम कहते हैं. This is how through road it is connecting, and through अरे करेंगे अभी करेंगे. Clear? So we'll in the next class we will discuss this after Afghanistan. जर्मनी हट रहा है, सॉरी. हाँ, मतलब उसका प्रपोज है, ये प्रपोज है, ये इस रूट से हम चलेंगे. तो देखिए दोनों आकर के यहाँ पर इटली के पास कनेक्ट हो रहा है थ्रू द सी रूट ऑल्सो. और इफ यू गो थ्रू इट यू कैन सी हाउ इंडिया इज बीन एनसर्कल्ड. हाँ, आप देखिए ऊपर से भी एनसर्कल्ड हो गया और नीचे से भी, यहाँ से वो आकर के कोलंबो श्रीलंका में देखिए, सितवे पोर्ट यहाँ देखिए हनोई, फिर वहाँ से आता है केनिया, दिस इट विल बी, और इसके बाद वी विल डू द इंडिया म्यांमार, द लास्ट फ्रॉम द इंडिया नेबर. एंड इसके थ्रू दिस वी हैव आल्सो कंसीडर्ड bilateral trade with India. Now bilateral trade left with USA, Russia, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट एशिया. ठीक है, तो उसमें हम देख लेंगे. ठीक है, एनी डाउट? So we will continue tomorrow. Thank you for being here. Have a good day.